Everything you want to know about English, okay, that you can get from Alpa ma'am. Alpa ma'am, she'll be teaching you critical reasoning. Okay, is that okay? Okay, now to the next one. Now this is the first question that is on your way. Okay, now try this. The venue for the wedding have not yet been finalized. Questions are pretty easy. What all are we supposed to do? What is the best approach for सेंटेंस करेक्शन? सेंटेंस करेक्शन का अप्रोच क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? पूरे सेंटेंस को पढ़ना चाहिए और सेंटेंस को रीड करना. कई बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा पढ़ करके सेंटेंस करेक्शन करने लगते हैं, या सिर्फ आप ऐप ये देखने लगते हो, अपने ऑप्शंस देखने लगते हो. सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं बनेगा. आपको यू हैव टू सी द ऑप्शंस एंड यू ऑल्सो हैव टू रीड द सेंटेंस फर्स्ट. सेंटेंस पढ़ लोगे, समझ लोगे तो सारी आधा काम हो ही गया. तो रीड एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट. ओके, वंस दिस इज डन, सबसे पहले कौन सा ग्रामर कॉन्सेप्ट देखूं सर? ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे देखना ही पड़ेगा? वो है SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ेगा. तो इस सेंटेंस में देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एरर है. देन वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड. फॉर द वेडिंग क्या है? फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है. सब्जेक्ट कौन सा है? वेन्यू. वेन्यू होने पर क्या होने चाहिए? हैज. देख रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके बाद टेंस की, उसके बाद प्रीपोजिशन की. हमेशा प्रीपोजिशन का एरर ढूंढा ही करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा ही आपको प्रीपोजिशन का एरर ढूंढना ही पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Although this is a narrowest street, many large trucks can enter it. Okay, यहां पर मैं although this is a narrowest street, large trucks can enter it. बताओ क्या आना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए इसमें? देखो, सबसे पहले तो कंपैरिजन है ही नहीं. तुम बोलोगे सर द नैरोवेस्ट लिख दो. हाँ, द नैरोवेस्ट लिख दो, लेकिन नैरोवेस्ट स्ट्रीट बताने के लिए मेरे पास कंपैरिजन ही नहीं है. जब क्या कंपैरिजन है ही नहीं तो कहां पर में एरर है? कंपैरिजन जब नहीं है तो फिर हमको द भी नहीं बोलना पड़ेगा. यहां द भी नहीं बोलना पड़ेगा. क्या बोलना पड़ेगा? ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट, और नैरो बोलना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा. नैरोवेस्ट क्यों नहीं बोल सकते सर? तरुण वेलकम बेटा, एंड स्मृति ऑल्सो. ओके, नाउ व्हाई कांट यू सर, हम द नैरोवेस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपैरिजन तो दिख ही नहीं रहा है सेंटेंस में. किसके साथ कंपेयर कर रहा हो? ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली आपको अ नैरो स्ट्रीट ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. ओके, ट्रेन जब चलने लगी तो एक दूसरे को चिल्लाने लगे कि भाई चढ़ो चढ़ो, इस टाइप का. शाउटेड आउट टू ईच अदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. आंसर क्या होगा? नो आइडिया? सो लेट मी टेल यू, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं आया आपका. आंसर है डी. ठीक है, लेकिन क्या एरर बताया जाएगा? ईच अदर को वन अनदर कर दो. ईच अदर को वन अनदर कर दो. लेकिन तो आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है. ईच अदर दो के लिए भी हो सकता है, ईच अदर दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है. इफ यू नो द नंबर अगर पता है तो मैं ईच अदर दो ही बोल सकता हूं. थ्री ऑफ देम तो सही है बेटा. थ्री ऑफ देम में तो कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत डी में आ जाएगा, चूंकि ईच अदर को ईच अनदर लिखा. अच्छा, ऊपर से ईच अनदर लिखा हुआ है, ईच अदर भी नहीं लिखा हुआ है, तब तो चेंज करना ही पड़ेगा. ठीक है, तब तो चेंज करना ही पड़ेगा. आप या तो आपको ईच अदर लिखना पड़ेगा या वन अनदर लिखना पड़ेगा. मैं तो ईच अदर ही पढ़ लिया था. ठीक है, वन अनदर लिखना पड़ेगा. ईच अनदर का तो पैर ही नहीं है, तो ईच अदर लिखना पड़ेगा या वन अनदर लिखना पड़ेगा. याद रखना है, ईच अदर दो से ज्यादा के लिए भी लिख सकते हैं. वन अनदर तो दो से ज्यादा के लिए लिखते ही हैं. वन अनदर तो दो से ज्यादा के लिए ही है, या जब नंबर नहीं जानते. व्हेन यू डू नॉट नो द नंबर यू राइट वन अनदर. ओके, द क्लास नो वन अनदर. द क्लास नो वन अनदर. आई एम नॉट टेलिंग यू द नंबर, एंड आई से द क्लास नो वन अनदर.
And if it is 10 or 15 or 100, or we don't really care, we'll say each other when the number is known. But if it is only two, then only each other. It's only each other. That's how it works. Okay. Then to the next question. There was enough evidence to convict him on selling of fake medicines. इसमें बताना. There was enough evidence. Good afternoon, beta. Good afternoon. इसको ना, there was enough evidence to convict him on selling of fake medicines. Waiting for your answers. No, D, yes, D is the correct one. The preposition, convict somebody of something, of selling fake medicines and selling of fake medicines. This is also wrong. Okay, simply say there was enough evidence to convict him of selling fake medicines. D, D say. You convict somebody of something. You convict somebody of something. Accuse somebody of something. ऐसा. वेरी इजी प्रिपोजिशन का एरर एब्सोल्युटली. और एक प्रिपोजिशन आएगा ऑफ और सेकंड वाला प्रिपोजिशन हट ही जाएगा. यहाँ पर मैं ऑफ लिखना पड़ेगा और यहाँ कोई कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि सेलिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखना है ना. फिफ्थ देखो, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर. Selling fake medicines, absolutely. Now, the reason for visiting Meerut was because my mother needed to be looked after. बताना. This is slightly tricky because we normally get it wrong, write it wrong, therefore. Absolutely, Sneha, you're right. It is not wasn't because. See, when you have said reason, कारण है कि बोलता हूं या कारण है चूंकि. कारण है चूंकि बोलते हो या कारण है कि बोलते हो. कारण है कि बोलना पड़ेगा ना. Was that. बिकॉज नहीं होगा. रीजन और बिकॉज को एक साथ नहीं लिखेंगे, रिडंडेंसी हो जाएगा. ओके, रीजन और बिकॉज को दोनों को एक साथ नहीं लिखोगे. ठीक है. इवन दिस इज, यस, डी इज द करेक्ट वन. ओके, इवन दिस इज रॉन्ग. ओके, द रीजन वाई, व्हेन वी से इवन दिस लुक्स फनी, रीजन के साथ द रीजन दैट आई हैव कॉल्ड यू इज द रीजन वाई आई हैव कॉल्ड यू. The reason that I have called you, I think that is better even in this sentence. Okay, so keep that in mind. A confluence is a place when two or more rivers meet. Easy. This is a very easy question. A confluence is a place when two or more rivers meet. See, absolutely, sir. When to कर ही नहीं पाओगे. You are talking about a place, therefore use where. It's not when. Very good. Very nicely done. Now, seventh question. No one have ever visited this place before. Again, very easy. No one have ever visited this place before. Very easy question, right?
No one have, no one have, no one is the subject. One is the subject. So what should we write? Has. हो तो गया. No one has ever visited. और has के साथ तो visited ही लिखना पड़ेगा स्नेहा. No one has ever visited ही लिखना पड़ेगा. Has के साथ V3 ही लिखना पड़ेगा. There is no other way. B. Absolutely, Komal. You're right. You're right. Okay. Now try the next question. A large amount of money he invested were wasted. Now again, very easy. That was what I thought. How could Sneha answer it incorrectly? Now this is a large amount of money he invested were wasted. No, no, Sneha. A is correct. There are two clauses, you see. He invested, and this clause is correct. You always check a sentence for the clauses and the phrases. Every sentence must be broken into these two. How many clauses do we have and how many phrases we have? Okay, this is one clause. This is clause number 2. Of money is a phrase. Okay, the subject is large amount. Were. Large amount were or was. Large amount was. Done. Subject verb agreement is the first error you look for. Every time you get a sentence, जब भी कोई sentence आपके पास आए, the first error we look for is subject verb agreement. The first error we look for is subject verb agreement. Subject verb करे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, याद रखना. और subject verb करने के लिए ये दोनों आने चाहिए. कितने clause हैं, कितने phrase हैं. ठीक है. और concepts नहीं आता है तो please join the courses and learn these concepts. These are very important. He always stood up for the rights of the oppressed. He always stood up for the rights of the oppressed. Let me see how many of you get this right. You can also say no error, but don't think that no error is the answer. I just pointed out. Okay, very good, Sneha. It should not be stood up for, because you say always. If it's no more, then it's okay. अगर जिंदा नहीं है तब तो ठीक है, stood up लिख दे सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर जिंदा है तो, और वो डेटा है नहीं मेरे पास, जो डेटा है वो ऑलवेज है, और वो ऑलवेज का मतलब तो होता है हमेशा, तब तो सर प्रेजेंट टेंस ही काम करेगा. ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर होना चाहिए. ओके, सो द आंसर शुड बी ए. गेट द पॉइंट. ऐसा नहीं है, सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग पर से, बट द प्रॉब्लम इज ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड ही इज नो मोर, देन इट्स ओके. Then it's okay, but that data is not here. That piece of information is not here. उसके बिना कैसे करूँ? उसके लिए तो भैया तब always जो है तो always को देख के मैं करूँगा बस. ठीक है. That was the case. Okay. See, sentence correction is all about understanding the logic of the sentence and the pieces of information you have. कितना information है उसके अनुसार ही सोचना है. ठीक है. It would take up few of my time to explain to you the whole case. It would take up few of my time to explain to you the whole case. No. Few of my time. Very good. Very good. Who said that? Smriti. Very good. It's not few of my time, sir. It has to be some of my time. Time is uncountable. Time is uncountable. Now look at this. With uncountable nouns, we say some, much. Uncountables के साथ some, much वगैरह बोलते हैं.
countable के साथ we use all those words, few, a few, the few, okay, many, okay, all these come with countables. ठीक है, और ये countable नहीं है, time countable नहीं है, समय, हाँ, ठीक है, तो it would take up some of my time. And then there is one more problem. What is the difference between few and a few, sir? What is the difference? When I say, and then see, I'll be writing the countable nouns. I would say few books and I would say a few books. But what is the difference? Huh? There is a whole lot of difference. When I say few books, then I say almost zero, almost none. When I say a few books, I actually mean some. Do you get the point? When I say few know good English, if I say few know good English, what I mean is almost nobody knows good English. Almost none knows good English. That is my meaning. Yaad rakhna. When I say few know. But then if I say a few, then it means some. Okay, so be careful with these words. एक बार grammar आपको अच्छा से करना पड़ेगा. Some from all is. Okay, good. Now, see, every day at 11 o'clock, you have Ankur Tomar sir's on the app. Okay, Ankur Tomar sir's BBA entrance examination quantitative ability special classes are conducted by Ankur Tomar sir. And these are your faculties. Okay, Rohindeep Kaur ma'am, you must know her. You must have taken a lot of classes of ma'am. And Rabia Zara Khan ma'am, you must have taken some class of many classes of ma'am also, and Salika Ahmed sir, and every day you do take my classes. Okay, so I'm Vinod Shankaran and this is Ankur Tomar sir. Okay, that's all for this class. Thank you all very much. See you in the next class. Please subscribe to this channel, share and like, and share this with your friends and ask them to also join. I'll always teach you some good concepts here for free. And you can also ask your questions. If you have your doubts, you should have. See, whenever there is a teacher in front of you, make sure that you ask doubts. Free, मैं मिला हुआ है तो क्यों छोड़ूंगा क्यों? पूरा अच्छा से prepare करके आओ, बोले कि सर ये doubt हमको बता दो. Okay? Prepare your questions and then you can simply type them out. Okay? Thank you all very much. Please be regular. You will love the classes. I'll teach you. We'll see. An old man will have a lot of experience. Now, what am I going to do with my experience if I don't share it with you all? So I'm sharing it with you. You share it with your friends. Okay. Thank you all. Bye-bye. See you.